Morning students, I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Students, today I am going to teach you chapter 4 of Flamingo, subject English. Okay, this is the fourth chapter of Flamingo. The name of this chapter is the Rattrap. Rattrap, which is written by Selma Lazaroff. So, according to the topic, you came to know what is the Rattrap. Rattrap is दिस इज द पिक्चर ऑफ रैट ट्रैप. ओके, चूहेदान जिसे हम कहते हैं चूहेदान. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट इज रैट ट्रैप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैट ट्रैप. द राइटर वांट टू टेल अस विद दिस नेम. So first of all, I am telling you about in brief about author. Author Selma Lazaroff was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. He has translated his stories many languages. Okay. A universal theme runs through all of them, and in all the stories he always used universal theme, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. A belief that the essential goodness. What is the belief of the author? That a bad person can change with the goodness and kindness of a human beings. This is the theme of this chapter. Means a love and sympathy can change the bad things of a human being, of a person. This story is set in amidst the mine Sweden, rich in iron ore, which figure large in history and legends of that country. ये जो स्टोरी का जो सेट है ये किसके बीच से लिया गया है? स्वीडन में जो माइंस हुआ करती थी उस समय खान होती थी और आयरन का जो व्यापार था बहुत ज़्यादा उस समय चरमों सर पर था, मतलब बहुत ज़्यादा व्यवसाय उस समय इसका था, आयरन का था. So the story is told somewhat in the manner of a fairy tale, and this story is told you like a fairy tale. And this is the author of this chapter, Selma Lazaroff, and she was born on 20th November 1858 and died at 16 March 1940. First of all, I am going to tell you the theme, which already I have to tell you. The story upholds the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding. As I have already told you that what is the theme of this chapter, that the essential goodness of a human being means a man who is bad, he can change with the other person due to his kindness and due to his good behavior. It brings into focus the idea that the world is a rat trap. And what is the theme of this chapter? That the whole world is like a rat trap. Riches, joys, shelters and food are all lucrative baits to trap mankind. And what did we do to trap a mouse in the rat trap? हम क्या करते हैं? एक चूहे को चूहेदान में फंसाने के लिए we keep bait in that rat trap. हम उस चूहेदान में कुछ बेट रखते हैं, मीन्स कुछ चारा रखते हैं, एज पोर्क, एज ब्रेड, एज चीज. सो इन दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो रैट ट्रैप. एंड व्हाट इज द बेट ऑफ दिस वर्ल्ड? द रिचेस, जॉय, शेल्टर्स एंड फूड. मीन्स जो लग्जरियस थिंग्स हैं, दीज आर द बेट्स इन दिस वर्ल्ड. व्हेन वी ट्राई टू टच देम, व्हेन वी ट्राई टू गेट देम, we trapped ourselves in that rat trap. Title: why this name is given to this chapter? The rat trap is a metaphor to highlight the human predicament. Human predicaments, जो मनुष्य की कुछ ऐसी कंडीशन जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता. Just as a rat is fooled by a bait and gets trapped, most human beings are likely to fall into the trap of material benefits. Rat trap is metaphor. This is a metaphor and highlight human predicaments, problems of human beings in life. Just as a rat is fooled by a bait, as we make fool to rat with the help of bait, just like that, the world also make us fool
to offer us riches and joy, etc. Gets trapped human beings like, and we also fall into that rat trap when we try to touch them. This story said, I have already told you what is the setting of this story. Okay, so characters, the main characters of these chapters are these, and I want to tell you something. What is the importance of this chapter? All the characters of this chapter are known by their profession. There are only two characters who are called by their names. Okay, so first character is a peddler with rat taps. The main character of this chapter is peddler with rat taps. Peddler, who is peddler? Peddler हम किसको कहते हैं? घुमक्कड़ और आवारा, who has no shelter to live. So he always wander here and there. That person is called peddler, and he sells rat traps. That his profession was to sell the rat traps. An old man, a crofter, and the second character is an old man who is also known as his profession a crofter. Crofter means a farmer. And third person is master smith in the Ramsö iron mill in Sweden, and this is the third person who is the owner of the Ramsö iron mill. Okay, he is also known, we also came to know about him with his profession. His name is also not mentioned there. And fourth character is helpers in the mill, blacksmiths. The helpers of apprentice of the mill are called blacksmith. And fifth is iron mill owner. Fifth is the owner of the iron mill. And sixth is the character who is called by her name, that is Edla Wilmanson, because she has no profession. That's why she is known as her name Edla Wilmanson, daughter of the iron mill owner. She is the daughter of iron master. Okay, so these are the main characters of this chapter. Now synopsis. Synopsis means summary of this chapter. Mostly you have come to know what is the story of this chapter. The story begins like a fairy tale, as I have told that this story is told like a fairy tale. The central character is a beggar and a petty thief who goes about selling Rattraps of the wire to make a small living. The main character of this chapter is the peddler who sells rat traps. Okay, how did he make these rat traps? वो ये जो चूहे दांते कैसे बनाता था? He was not so rich that he could purchase the raw material to make the rat traps. So what did he do to make the rat traps? वो क्या करता था? He collect the materials from the wastage और from a farmhouse से, मतलब वो या तो उनको मांग कर as a bag और to collect from the garbage, collect करके वो वायर से अपना rat traps बनाता था, and this was the way of his living. But he could not earn so much money that he could fulfill his stomach. So what did he do? He finds it difficult to make both ends meet. Both ends meet means a phrase that उसे अपने दोनों वक्त का भोजन उस व्यवसाय में नहीं मिल पाता था, यानी चूहे दान को बेचकर वो इतना मनी नहीं कमा पाता था कि वो अपना पेट भर सके. तो what did he do? Accept it. It makes him reflect about his own condition and the world at large. Means, and he fancies that the whole world is nothing but a big rat trap. So what did he do? Accept it. He do small thievery, जो छोटी मोटी चोरियां किया करता था या मांग कर अपना पेट भरा करता था. And the whole world is nothing to him. This is also a rat trap. It offers, I am telling you some main points I will tell later on. It offers rich and varied baits to people who bite on them and get trapped in the rat trap. I have explained it that this world is nothing. This is a rat trap, and all the luxuries of life are the bait to tempt to the people. The storyline unfolds
gradually with the various beds being offered to the beggar. धीरे धीरे जो है ये स्टोरी मतलब हमें ले जाती है कि किस तरीके से इस बैगर के लिए, हु इज द बैगर, द पैडलर. Peddler is also beggar and he is called in different types of title in the whole chapter. Whenever he meet to the different characters he was called with other name. Okay, अलग अलग नामों से उसको यहाँ बुलाया गया है. As you can see he is called beggar there. तो धीरे धीरे हम जानेंगे कि कैसे वो उस ट्रैप में खुद को फंसा लेता है. The old man that the trap meets is generous with his hospitality, but the bait of the 310 kroner bills is enough to tempt him. So second character was the crofter. He was the host who welcomed this person. The old man meets with a generous way and he helped them and he shared all the things with him, and because he was a lonely person, and he also show him his 310 kroners bills which tempts to the peddler to theft them. Next, at the Ramzu iron works, and after that incident what happened next at the Ramzu iron works, while seeking shelter for the night, the tramp bites the bait offered to him by the owner, the iron masters of the mistaken identity. First bait उसके लिए क्या था, those 30 kroners. Okay, and the next bait मतलब पहला चारा उसके लिए क्या बना, वो 30 kroners of the crofter. And second bait, when he went to the iron mill and the owner of the iron mill thought him his friend, and in greed of the some money he accept his hospitality. Okay, so Adla, the iron master's daughter, offers yet another bait of full-hearted generosity, comfortable living, and a magically peaceful Christmas for the tramp. And third bait of the things offered by iron master's daughter Adla. Yet another bait means what did she do? She gave him full-hearted generosity and gave him comfortable life for a day, and this gave him a magically peaceful Christmas for the tramp. So these were the baits for the peddler. Now conclusion, I am telling you the summary of this chapter. Finally the bitter truth dawns on the host. Host means Adla will mention. So what was the, उसे सच्चाई पता चलती है, उसके सामने एक कड़वी सच्चाई आती है. वो क्या थी, Adla is downcast when she learns that the peddler is a thief. She became disappointed when she came to know that the peddler was a thief. जब वो इस बात को उसका पता चलता है कि peddler जो है, जो उसके घर में ठहरा हुआ, वो एक चोर है, तो बहुत disappointed होती है. The tramp undergoes a change of heart after experiencing her kindness. और लास्ट में क्या आता है कि जो ट्रैम्प है, अनदर नेम ऑफ द पैडलर इज द ट्रैम्प, मीनिंग ऑफ द ट्रैम्प इज ऑल्सो द सेम. सो ही अंडरगोज अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स ड्यू टू द हॉस्पिटलिटी of Adla, he had totally changed. His heart has become totally changed due to her kindness, and he returns the stolen money. And what was the result of it? That the money which he had stolen, he returns all the money to that girl, to Adla, and writes a letter to her thanking for helping him escape the Rattrap. Means he also thanks her because she had totally changed that person from a thief, and he had become a kind person now, and he also returned all the money which he stolen. He attains nobility of spirit and becomes Captain Vonistally. And how he came to know by Iron Master as a Vonistally, who was his friend. He was in army. So the story ends with the victory of human goodness. So the end of the story is that a bad person changed into a good person, and the character which was, जिस करेक्टर्स को मतलब उसे माना गया था, जो आयरन मास्टर था, उसने उसे अपना फ्रेंड वॉन स्टेली माना था.
सेकेंड नेम इज वॉन स्टेले विच इज आइडेंटिफाइड देयर। ओके, तो उसमें वो अपने आप को उसी करेक्टर में चेंज कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, वो अपने आप को वॉन स्टेले ही समझने लगता है अपने आप में बदलाव लाने के बाद। किसके कारण? एडलर के कारण। ओके, now come to the main points of the chapter according to the paragraphs. Same points are given there which we came to know in the summary, जो अभी हमने summary में पढ़े थे, but these are in details, I am telling one by one. The Rattrap is a story that underlies a belief that essential goodness in human beings can be aroused through sympathy, understanding and love. रैट्रैप जो वो एक ऐसी कहानी है जो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करती है। वो क्या विश्वास है? कि किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है उसे कोई नहीं बदल सकता या उसकी बुराइयों को कोई बाहर निकाल नहीं सकता। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके अंदर की बुराइयां खराब होती हैं। ठीक है, वो हमारा जो विश्वास है, या हम जो ये मानते हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति को हम किसी को नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है। इस कहानी के थ्रू हम ये जानेंगे वी कैन चेंज अ पर्सन विद अवर गुडनेस, विद अवर काइंडनेस। हम अपनी दयालुता के कारण या अपनी अच्छाइयों के कारण किसी भी बुरे व्यक्ति की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। Once a man went around selling small rat traps, but he took to begging and thievery to keep his body and soul together. एक बार एक व्यक्ति था जो कि who was that person? Peddler। और वो अपनी जीविका कैसे चलाता था? चूहेदान बेचकर या फिर छोटी मोटी चोरियां करके। और चूहेदान वो कैसे बनाया करता था? फार्म हाउस से या कहीं वेस्टेज से वो वायर कलेक्ट करता था और उसके थ्रू वो चूहेदानों को बनाया करता था। बट रैट्रैप्स के को सेल करके उसको इतना मनी नहीं मिलता था कि वो पेट भर कर भोजन कर सके। दैट्स वाई ही हैव टू डू बेगिंग एंड ऑल्सो स्मॉल थीवरीज, छोटी मोटी चोरियां भी करता था। वन डे एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस चैप्टर, all the characters of this chapters are suffering from loneliness। इस चैप्टर में आप देखेंगे जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे ही अकेलेपन से परेशान हैं। फॉर एग्जाम्पल पैडलर, क्राफ्टर, द आयरन मास्टर, एडलर विल मेंशन। ओके, वन डे ही वॉज स्ट्रक विद द आइडिया द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप एंड इट ऑफर्स रिचेस एज बेट। ये जो पैडलर था, इसका कोई घर नहीं था, मतलब इसे जहाँ भी जगह मिल जाती थी वहीं वो रुक जाता था, वहीं अपनी शेल्टर बना लेता था या उसे जहाँ भी इसको शरण मिल जाती थी। और सेकेंड थिंग, इसे क्योंकि ये एक पैडलर था, ट्रैम्प था, बेगर था, दैट्स वाई नबडी लाइक टू हिम, नबडी लाइक टू कम इन देयर हाउसेज। कोई भी इसे पसंद नहीं करता था कि वो किसी के घर में जाए। कभी इसको सम्मान नहीं मिला एंड बिकॉज ही हैज़ नो हाउस दैट्स वाई ही कुड ऑल्सो नॉट स्लीप अ साउंड स्लीप इन हिज होल लाइफ एंड दीज थिंग्स वर अंडरस्टैंड बाय अ गर्ल। ओके, सो वन डे ही स्ट्रक विद द आइडिया। एक दिन अचानक से जब वो सड़क पर घूम रहा था, उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक किया। वो क्या आइडिया था? दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये जो संपूर्ण संसार है कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। और उसका जो चारा है वो क्या है? रिचीज है। रिचीज आर द एज अ बेट। और जो इसकी वो है लग्जीरियस लाइफ जो है वो हमारे लिए किसका काम करती है? चारे का, बेट का काम करती है। व्हेन वी ट्राई टू get them, we try to tempt them or touch them, we got ourselves in that rat trap। People let themselves be tempted to touch the bait, then it closed it in on bringing an end to everything। Means when we try to touch them, when the people tempted and to touch the bait, then it closed, it means the rat trap closed in on them, bringing an end to everything। और उसके बाद वो पिंजरा उनको अपने अंदर फंसा लेता है और उनकी लाइफ का एंड होता है। One dark evening, the Rattrap peddler sought shelter in an old crofter's roadside cottage। सर्दी का मौसम था। एक बार उसने
मतलब अभी उसे कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए, तो उसे एक सड़क के किनारे पर एक कॉटेज दिखाई देती है, एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, और ये वो रोड जो कि रोड साइड पर थी, वहाँ जाता है। ही नॉक द डोर एंड एन ओल्ड मैन केम and that old man was a crofter. He gave him permission to enter into his house. What did he do? The old man, though the peddler was a stranger to him, यद्यपि जो ये पैडलर था उसके लिए एक अजनबी था, लेकिन फिर भी वो उसको अपने घर में ठहरा लेता। और उसके फटे हुए कपड़े थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और उसके सीने पर पिंजरे का जो था एक बंच टंगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति जो है किसी को ऐसे परमिशन नहीं दे सकता। क्या आप लोग उसे अपने घर में अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे। बट इस ओल्ड मैन ने, इस क्रॉफ्टर ने उसको अंदर आने दिया। क्यों? क्योंकि वो भी अकेला रहता था, उसके फैमिली नहीं थी। सो ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन इन हिज होम। द ओल्ड मैन गेव हिम फूड, टोबैको, दे एंजॉयड द कार्ड गेम टू, एंड ही वॉज अ पुअर मैन बट ही give him respect. He also offer him food. वो उसको खाना भी देता है. He also shared tobacco and they enjoyed a card game also at night. Next morning, the peddler stole away his 30 kroners. ये जो ओल्ड मैन था, क्रॉफ्टर जो था, उसने ना केवल उसका स्वागत किया, उसे भोजन दिया, बल्कि उसने अपने कुछ सीक्रेट भी उसके साथ शेयर किए। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ लोनली पर्सन, सो ही वॉन्ट टू टॉक समवन एंड टू फाइंड दैट पैडलर इन टू हिज हाउस ही गिव हिम रेस्पेक्ट एंड ही ऑल्सो शोज हिम हिज 30 kroners which he earned by selling the milk of the cow. He did work in Ramzo iron mill in his young age. Now he has become old. जब वो यंग था तब वो रामजो आयरन मिल्क में काम किया करता था, लेकिन क्योंकि अब ओल्ड हो चुका था तो अब उसने अपनी जीविका का साधन किसको बना लिया था? गाय का दूध और उसका जो मिल्क वो था घी बनाकर वो उसको सेल करता था, और उसने उससे कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ मनी, जो कि क्या था? 30 kroners। 30 kroners क्या है? स्वीडिश करेंसी है। तो उसके 10 के 3 नोट्स थे, जैसे हमारे 10 के नोट होते हैं वैसे 10 की उनकी करेंसीज थी। तो 30 kroners थे। वो उसको एक पाउच दिखाता है। पाउच कहाँ टंगा हुआ था? विंडो के पास एक नेल पर टंगा हुआ था। वो उसको लेकर आता है और उन 30 kroners को बहुत ही रफ वे में उसमें ठूंसकर उसने भरे हुए थे, रिंकल्ड 30 kroners थे, उसे शो कर दिखाता है, और उसके बाद उन्हें वापस वहीं रख के उसी जगह पर टांग देता है। The peddler was a beggar and thief also. So next morning the peddler stole away his 30 kroners. Next morning both of them get up and the crofter went to milk his cow. वो अपने काम पर चला जाता है गाय का दूध निकालने। तो पैडलर भी घर पे क्या किया? he also went to his way, on his way, वो भी अपने रास्ते चला जाता है। But after some time, कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही देर बाद, he returned to the crofter's house, but he did not come to the main gate. वो main gate पर नहीं आता। he went to the window where that pouch was hung on the nail. He then smashed the window and take out the pouch from that window and he theft the kroners from it. उसकी जो 30 kroners थे उनकी चोरी करता है, उसको वापस पाउच को वहाँ टांग देता है और वहाँ से निकल जाता है। The Rattrap peddler escaped into a big confusion forest and got lost. जब वो जा रहा होता है तो उस समय, क्योंकि उसका अब उस पहला जो चारा था उसका ये क्या था? 30 kroners in which he got himself, in which he trapped himself, जिसमें वो अपने आप को फंसा चुका था। इस संसार रूपी रैट्रैप में उसका जो फर्स्ट बेट बना वो क्या था? 30 kroners, जिसको उसने पाने की कोशिश की और वो फंस गया। उसके बाद क्या गलती करता है कि he was going on the road, जब वो सड़क पर जा रहा था तो उसके माइंड में क्या आता है कि if he will go to the main road, अगर वो मेन रोड से जाता है तो हो सकता है रास्ते में उसको कोई पकड़ ले, क्योंकि उसके पास चोरी किए हुए kroners थे। तो उसने सोचा शायद पुलिस पकड़ ले, तो वो मेन रास्ते से ना जाकर वो वहाँ कौन सा रास्ता अपनाता है? जो जंगल का रास्ता था।
ओके, so Rattrap peddler escaped into a big confusing forest and got lost. और वो जंगल में जब वो वहाँ जाता है तो वो रास्ता भूल जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है, और जब वो वहाँ घूमता रहता है लास्ट में वो फाइनली रियलाइज करता है कि वो तो एक ही जगह पर घूम रहा है, घूम कर वापस एक ही जगह पर वापस वहीं पर आ जाता था जहाँ से वो चला था। उस समय उसको रियलाइज होता है दैट ही हैज़ ऑल्सो ट्रैप्ड in the rat trap of this world, and the bait was those 30 kroners. While resting on the ground, he recollected his idea that the world is a rat trap and thought his end was near. Now he had got tired, badly tired, and he thought that his end has come. वो बहुत बुरी तरीके से थक चुका था और थक के वो ज़मीन पर बैठ गया और लेटने लगा। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो उसकी लाइफ का एंड होने वाला है, क्योंकि वो जंगल में फंस चुका था और वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सो हियरिंग अ थम्पिंग साउंड ही रीच्ड रामजू आयरनवर्क्स फॉर अ नाइट शेल्टर। ठीक तभी जैसे ही वो लेटने वाला था तभी उसको थम्पिंग की साउंड सुनाई देती है। थम्पिंग किसी भी चीज़ के जब हम चोट करते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है वो साउंड उसको सुनाई देती है, और उस समय उसको लगता है कि हाँ आसपास कोई है। और वो क्या था, एक वहाँ पर नियर बाई ही एक रामजो आयरन मिल थी, वो उसी आवाज़ की साइड में चल पड़ता है। एंड देन ही गॉट अ शेल्टर इन दैट रामजो मिल, और उस रात के लिए उसे रामजो आयरन मिल में शेल्टर मिल जाती है, यानी ठहरने के लिए रात बिताने के लिए उसे एक जगह मिल जाती है। एंड दैट वॉज द टाइम ऑफ विंटर, बहुत ज़्यादा ठंड थी और साथ में बारिश भी हो रही थी और वो भीग चुका था। और आयरन मिल में क्या होता था, फर्नेस मीन्स एक भट्टी होती थी। आयरन में क्या है, कच्चे कोयले को जो है आग पर तपाया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है। तो वहाँ पर बहुत मतलब छोटी सी ही मिल थी और उसमें एक फर्नेस जल रही थी, एक भट्टी जली हुई थी। तो उसकी जो तपन होती थी, उसका जो लाइट था अंधेरे में, डार्क नाइट में, वो उस टाइप के सभी पैडलर्स को अपनी तरफ टेम्प्ट करता था। द लाइट एंड द वार्मथ ऑफ दैट फर्नेस टेम्प्ट टू द पैडलर लाइक हिम टू स्टे देयर। वहाँ की जो लाइट और जो वार्मथ थी, जो गर्मी थी, उस जैसे हर व्यक्ति के लिए अपनी तरफ आकर्षित करती थी। तो पैडलर भी वहाँ शेल्टर के लिए पहुँच जाता था। ओनर केम, और वहाँ जो ब्लैक स्मिथ थे, वहाँ के जो अप्रेंटिस थे, वो उनसे हेल्पर and the worker who did work in that iron mill, and he asked for shelter to stay at night, and they give him permission without saying any words. The owner came on his night rounds and noticed that ragged rest near the furnace, and because उस समय आयरन वर्क जो था बहुत ज़्यादा उसमें था, और जो उसका मालिक था, आयरन मास्टर जो था, वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन मार्केट में लाना चाहता था, और इसीलिए वो दिन में 2 विजिट करता था अपने मिल में। दैट टाइम वॉज ऑल्सो द विजिट ऑफ आयरन मास्टर। ही केम इन टू द आयरन मिल एंड ही नोटिस दैट पैडलर नियर द फर्नेस। वो उसको नोटिस करता है फर्नेस में। देर वॉज नो लाइट एक्सेप्ट द लाइट ऑफ दैट फर्नेस। वहाँ पर और कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ उस भट्टी की ही लाइट थी। ही टुक हिम एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस नील्स ओल्फ। तो उस अंधेरे में, क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं थी, तो उसे देखकर उसे एहसास होता है कि शायद ही उसका पुराना फ्रेंड है, परिचित है, जिसका नाम था नील्स ओल्फ। नील्स ओल्फ जो था वो मतलब आर्मी में उसके साथ उसका कलीग था। He invited him to stay with them for Christmas, but the stranger declined the offer. Iron Master lived with his daughter at the Will Mansion. So Christmas was near. That's why he wanted someone to celebrate Christmas. और उसे अपना acquaintance मिल गया था. That he was happy to find someone to celebrate Christmas with anyone. So he invited him. He invited peddler to stay with them for the Christmas. वो peddler को अपने घर Christmas celebrate करने के लिए invite करता है. But the stranger, now we are calling him stranger. The peddler is known as a stranger in this paragraph. When he was in the mill, he was identified as a stranger, and in the crofter's house he was identified as a tramp.
he is identified with different types of title. Okay, now he is known as a stranger, declined the offer, but he forbade to accept his offer because he knew that he was not that person whom the iron master thought. जो कि आयरन मास्टर सोच रहा था, वो अच्छे से जानता था कि वो उसका परिचित नहीं है. So and he also had a fear that he was trapped by those kroners, या वो फंस जाएगा इन kroners की वजह से, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए भी वो उसके साथ जाना नहीं चाहता था. His daughter Adla will mention persuaded to go home with him. So when he declined the respect या request of the iron master went to his house. वो अपने घर चला जाता है और वो अपनी बेटी से बताता है उसके बारे में, पैडलर के बारे में कि वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस है जो कि वहाँ पर है और वो बहुत ज़्यादा फटे हाल है, किसी कंडीशंस के कारण उसकी ये हालत हो गई है, शायद इसी वजह से वो हमारे घर आना नहीं चाहता. तो वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम उसे बेटर अच्छे से कन्विंस कर सकती हो और उसे घर ला सकती हो. तो एडला विल्मेसन जो उसकी डॉटर, वो उसको समझाकर घर ले आती है. उसके मन में भी थोड़ा सा लालच आ जाता है कि शायद कुछ क्रोनर्स उसके घर पर भी मिल जाएं, क्योंकि वो एक iron master was a rich person. She requested him to stay for Christmas Eve only, and he wanted to go from there, but Adler tried to convince him and she requested him कि whenever he want he can go from there. जब भी वो चाहे वो यहाँ से जा सकता है, सिर्फ आज रात उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट